we literally got scammed. So literally shameless lady. You won't believe it. हमारे यहाँ पे आके काम कर रहे हो. Kind of harassment that you've been through. So it was all a scam and pure harassment. Again, most toxic years of my life. Hi guys, welcome to my channel. I hope all of you are doing amazing. So in today's video, I'm gonna do this makeup look, and it's not just a makeup tutorial. It's a chit chat, get ready with me kind of a video. I'm gonna share a lot about my life of late. So make sure to watch this video till the end because I have really spilled some tea. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do that. Also turn the notification bells on so that you guys get notified each time I upload a video. And now let's dive right into the video. I'm going to start with the moisturizer, which is extremely important. Your skin prep can literally make or break your makeup look, so it's very important. I've grown old. When I started doing content creation, I was young. I was quite young. And now I'm quite old. I'm 26, by the way, in case you don't know. The dark circles, I have a lot of pigmentation. Pigmentation has increased, definitely. My face has gained a lot of weight, a lot of fat on my face. And of course, the skin is extremely dull thanks to my extremely healthy lifestyle. But yeah, jo hai wo ye hai. Anyhow, moving to the next step. I'm going to use this strobe cream. It's a sample that I got. Otherwise, MAC की strobe cream is like very expensive, so this works for me. I don't have my entire makeup collection with me, so जो है उसी से मैं काम चलाने वाली हूँ. But just gonna apply this on the high points of my face. Look at the shine. Oh my god, this is crazy. A little bit on my forehead, nose, and chin. Now it's festive season. October has begun, and currently I'm in Bangalore, away from my house, living with my sister. So we're gonna go back home literally one day before Diwali. So festive season इस बार ये हमारे लिए थोड़ा different होगा because we are away from family, and honestly India के festivals family के साथ ही अच्छे लगते हैं. And also in Bangalore the festive culture is extremely different. तो यहाँ पे वो वाली vibe definitely नहीं आ सकती है. Proper कुछ celebrate नहीं होगा, वैसी feel नहीं आएगी. तो content बना के I can get that feel. So I forgot to put the primer. I think ये पहले लगाना चाहिए था, but अभी nevertheless I'm going to use it. Makeup मेरे को बहुत ज़्यादा matte look पसंद था, but now I just like dewy. Just gonna apply it on my nose area. It has a lot of fragrance. It reminds me of Pond's BB cream for some reason. Moving on to concealer, I'm going to conceal my under eyes first because apparently I need concealing. बहुत ज़्यादा dark circles हो रहे हैं. And then we move to the foundation. So I'm in Bangalore currently, and last year also at this time I was in Bangalore. I remember we had gone for the Dandiya / Garba night. Honestly, I don't know the difference between the two, but yeah, I remember I had gone there. And at that time we were living in a different house. This is a different house. If you have watched my previous vlogs, you will know. So let me just share the story, what exactly happened. We literally got scammed in Bangalore. Last year we were living in a different house. When my sister had moved to Bangalore, she was living in a PG sort of a situation because it's not easy to find a house in Bangalore. I think people who have lived here know that, or in any metro city for that matter. But COVID के बाद, lockdown के बाद बहुत ज़्यादा prices increase हो चुके हैं rent के, so it's extremely difficult to find a good place for yourself. It took us a lot of months to find a house for us in our budget, and finally एक घर हमें मिला via a broker. Not just one, but उसमें 3 brokers involved थे, तो हमने literally 3 brokers की फीस भरी थी. तो उन 3 brokers के थ्रू हमें एक घर मिला. It was 1 RK, not even 1 BHK, but it was kind of fulfilling our requirement because my sister just had to live there and I had to live there for just some time. कभी आना जाना लगा रहता मेरा. I don't live here permanently, so we were like it will be sufficient for us because the location was good. It was in HSR. HSR is quite a premium location in Bangalore, तो वहाँ के rents भी बहुत ज़्यादा है. So we were like कि 1 RK is enough, and it was newly built. It was not a flat. It was the top floor on one of the bungalows. So that was the situation, and the owner of that house was living on the first floor, and जो ground floor था वो भी rented out था. Before signing the agreement, we had discussed a lot of things, and we had come on to an agreement, a common agreement, and that's only when we decided to move there. So on our moving day, in fact मैंने अपनी vlogs में भी बोला है, the owner had started annoying us so much. He was so interfering. हमें पहले दिन ही समझ आना चाहिए था. It was our fault कि हम समझे नहीं. We thought he is being caring and all of that, but it was all bullshit. He was just interfering. हमारा सामान मूव हो रहा था. The movers and packers team were shifting our little bit of furniture that we had and the luggage. Go with the foundation, and this is the MAC foundation. This is again a sample that मुझे free में मिला था. Airport पे थी मैं. I bought something else, तो उसने मुझे ये sample दे दिया था. It's in the shade NC42.
ओके सो या वी वर मूविंग एंड हमारे पास एक सोफ़ा था जो हमने रेंट पे लिया था एंड दैट सोफ़ा वॉज वेरी ह्यूज. जो उसकी स्टेयर्स थी हमारे टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, वो बाहर से स्टेयर्स थी एंड दैट दे वर वेरी वेरी नैरो था. तो दैट ओनर क्रिएटेड सो मच सीन एंड जो मूवर्स एंड पैकर्स का बंदा था, ही वॉज लाइक दिस गाय इज़ अनोइंग, ये ढंग से बात नहीं कर रहा है, ये सामान ले जाने ही नहीं दे रहा है, तो हम नहीं लेके जाएंगे, हम वापस लेके जा रहे हैं आपका सोफ़ा. इतना सीन क्रिएट कर दिया ओनर ने. फिर फाइनली कैसे तैसे इतना हसल के बाद सोफ़ा ऊपर शिफ्ट हुआ. जस्ट दैट वी हैड टू पे द गाय एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द ओनर. ही क्रिएटेड सो मच सीन एंड हमें तो सोफ़ा चाहिए था, तो वी हैड टू पे द गाय एक्स्ट्रा कि यार प्लीज़ चढ़ा दे तो किसी तरह सामान बस. एंड ऐसी शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. वी कम्प्लीटली इग्नोर्ड एंड देन वी स्टार्टेड लिविंग देयर. देन वी ऑल्सो हैड अ मेड हमने उसकी रेफरेंस ही रखी थी, सो वी थॉट कि हाँ उसके रेफरेंस की लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट बिकॉज हम नए हैं वहाँ पे, तो इट्स नॉट ईजी टू फाइंड अ मेड. सो हमने उसके रेफरेंस की मेड रखी जिसको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है. शी ओनली टॉक्ड इन कन्नड़ा. नाउ वी डोंट नो इफ शी वॉज प्रिटेंडिंग टू नॉट नो द अदर लैंग्वेजेस एंड नॉट टू अंडरस्टैंड वॉट वी वर सेइंग. हमने उसको लिटरली गूगल ट्रांसलेटर पर भी समझाया कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, बट शी रिफ्यूज्ड. वो कभी शी इज़ टू ऑलवेज एक्ट सो डम एंड शी वॉज वेरी ओल्ड. उससे काम होता भी नहीं था. तो हमने उसको 3 महीने झेला एंड वी थॉट कि हमें दिवाली पे दशहरा पे घर जाना है, उसके बाद हम उसे हटा देंगे. तो जब हम घर जाएंगे हम उसके सारे ड्यूज क्लियर करके जाएंगे एंड वी वोंट कीप हर आफ्टर दैट. तो दिस वॉज अ मेड सिचुएशन. शी वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड साथ साथ ओनर की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी. बिफोर मूविंग वी हैड क्लियर दिस थिंग टू हिम कि हमारे बहुत ज़्यादा पार्सल्स आते हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो, मिंत्रा एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो उसके लिए हमारी को सेपरेट बेल लगा दे. तो देयर वाज अ सेपरेट बेल फॉर आवर फ्लोर एंड स्टिल उसकी मॉम और वो खुद इतने ज़्यादा इंटरफेयरिंग थे. हिज मॉम तो हैड नो शेम. शी यूज्ड टू ऑलवेज स्टेयर एट ऑल द डिलीवरी गाइज एट अस. जो भी घर में आ रहा है जा रहा है वो पूरा बालकनी में खड़े होकर घूरती थी. तो लिटरली शेमलेस लेडी. एंड हमारे कोरियर्स आते थे तो दे यूज्ड टू फाइट विद द डिलीवरी गाइज बहुत ज़्यादा बदतमीजी से. एंड द डिलीवरी गाइज सेड कि हम लोग नहीं आएंगे डिलीवर करने. तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने. सो वी लिटरली हैड टू टॉक टू द ओनर कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड ही लिटरली सेड कि आई विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द डिलीवरी गाइज. एंड आधा टाइम तो हम नीचे जाते थे लेने कोरियर, बट उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. हम वो भी सहन कर रहे थे. लाइक ठीक है टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा, मे बी विल लुक फॉर अ न्यू अपार्टमेंट, बट वी हैड जस्ट मूव्ड इन. सो another problem was we had a center table and we had a sofa because it was a 1 RK. जो एक छोटा सा हॉलवे था उसी में सोफ़ा था, उसी में टेबल था, उसी में जाने का रास्ता भी था. तो we had to move the table every time we wanted to sit on that couch. तो उसके लिए वो आधी रात को ऊपर आ जाता था कि आप क्यों फर्नीचर हिला रहे हो, इतना ज़्यादा शोर होता है. इट्स लाइक डूड, आप किसी चेयर पे भी बैठे हो, यू पुल आउट द चेयर देन यू सिट, राइट. उतना तो होगा, इट इज़ बट ऑब्वियस. सो ही वॉज लाइक, ही केम लिटरली आधी रात को हमसे इस बात पे लड़ने के लिए. ही वॉज लाइक यू कैन नॉट मूव द फर्नीचर एंड इज लाइक टाइल्स निकल जाएंगी फर्नीचर मूव करने से. इमेजिन द काइंड ऑफ ब्रेन ही हैड. सो उस दिन भी काफ़ी लड़ाई हुई हमारी. से a lot of things that आपको हमारे लिटरली नॉर्मल चलने से भी प्रॉब्लम हो रही है. Then there was a camera installed on the terrace which was literally facing towards our house entrance. तो वो कैमरा भी काइंड ऑफ हमारे ऊपर इंस्पेक्शन के लिए था. एंड कोई भी गेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दे आर ऑलवेज स्पीकिंग, ऑलवेज इंटरफेयरिंग. आई मीन टेनेंट्स को कौन ऐसे रखता है? वंस यू पेड द रेंट द हाउस इज़ योर्स, नोबडी इज सपोज टू इंटरफेयर. कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं कि जैसे लाउड म्यूजिक नहीं, पार्टी नहीं एंड ऑल ऑफ दैट, बट इसके तो अलग ही प्रॉब्लम्स थे. वी वर जस्ट सो फेड अप. साथ साथ हम मेड से भी परेशान थे कि कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो वी डिसाइड कि हम इसको निकाल देंगे. एंड मेड के लिए भी आके बोलता रहता था कि इसको एक्स्ट्रा पैसे दे दो. एंड महीने में वो लिटरली 30 डेज में से 10 से 15 दिन आती थी, ऑल संडेज ऑफ. देन cleaning also she used to do on the alternate days. Then she didn't understand anything we used to say, and usme bhi the owner was interfering to pay her extra for nothing. Basically it was all a lot of chaos and we were just so fed up. हम दशहरा पे घर आए हुए थे. So for 1 month we were at home and then the owner calls कि 1 महीना हो गया, you have to pay the maid. And we were like, we have literally fired her. We have been here at home, she's not been working for us, why the hell we are supposed to pay her? And then he started fighting and the kind of things he said at that point of time, you won't believe it. He literally said things like, हमने तुम नॉर्थ इंडियंस को बैंगलोर में जगह दी है, तुम हमारे यहाँ पे आके काम कर रहे हो and you're not paying the maid. लिटरली उसने रेसिस्ट कमेंट्स शुरू कर दिए. 1 साल हो चुका है, मुझे इतने अच्छे से याद भी नहीं उसने क्या क्या बोला, बट ऐसे रेसिस्ट चीज़ें बोलने लगा एंड बदतमीजी करने लगा. एंड ही वॉज जस्ट फाइटिंग. Leaving aside all of these things, my sister agreed कि चलो we will pay her, but we are not going to keep her. We are firing her. We are going to keep a different maid. And he said, I will not allow that. Imagine, have you ever met an owner who will interfere with the maid that you are allowed to keep in your house that you are renting? It was just a joke.
It made no sense, but वो एकदम अड़ गया था कि I will not allow any other maid. My foundation is done. I'm going to put on a little more concealer. This is the concealer that I'm going to use, Rare Beauty. हाँ तो वो फ़ोन पे लड़ने लग गया कि मैं मेड अलाउ नहीं करूँगा. And then पता नहीं क्या ऐसे बात हुई कि okay fine I'll leave the house and all of that, and he himself was like I'm going to call the brokers and we're going to terminate your agreement. 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे तो वो निकाल सकता था, अग्रीमेंट में ऐसा ही लिखा हुआ था. बट काइंड ऑफ हरासमेंट दैट यू हैव बीन थ्रू, स्पेशली माई सिस्टर, बिकॉज जब दिवाली के बाद वापस जाना था तो माई सिस्टर वॉज सपोज टू गो अलोन एंड वी डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन बैंगलोर. शी वॉज ऑल बाय हर सेल्फ विद दिस मच केओस, एंड उसने वहाँ पे लिटरली दिवाली से वहाँ जाने पे 3 दिन निकाले, एंड विद इन 3 days शी एम्प्टीड द हाउस. बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट दिस न्यू हाउस, शी गॉट दिस न्यू हाउस इन फैक्ट. इट्स वेरी फार, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर, बट इट्स टू गुड. तो उसके बाद भी उस दिन जब मेरी बहन वापस घर गई तो मेड सुबह सुबह आई एंड सफाई करने लगी. तो माई सिस्टर लाइक जस्ट टेक द पेमेंट एंड मूव फ्रॉम हियर. एंड उसके बाद वो मेड चली गई बिना पैसे लिए, एंड ओनर को बोल दिया उसने. फिर ओनर झगड़ा करने आ गया, एंड वी वर स्टिल रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड जस्ट सॉल्व द सिचुएशन, बट दैट horrible person just did not listen. And उसके बाद within 3 days my sister emptied the apartment. और जो brokers भी involved थे उन्होंने किसी ने कुछ help नहीं किया. They did not even answer our calls. So it was such a bad situation for us. Literally मतलब इतना खर्चा होता है moving में, and security होती है वो भी उसने cut करके दी. Just imagine he had problems with यहाँ पे पानी के छींटे लग गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, उसने पैसे काट के दिए. एंड नॉट जस्ट दैट, वो हम लोग किचन में भी काम करते थे तो कोई बर्तन की आवाज़ आ गई उसके लिए भी वो ऊपर आ जाता था बोलने के लिए कि टाइल टूट जाएगी, मार्बल टूट जाएगा. जस्ट इमेजिन, आई वाज लाइक इतना प्यारा तुझे अपने घर से तो खुद ही रहे ना, क्यों रेंट पे दिया है. इफ़ यू कैन नॉट हैंडल द टेनेंट्स and if you can't just if you don't even have the basic understanding of co-living, then you're not supposed to rent out the apartment. Simple as that. And इतनी ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडियन से, then don't just fucking rent out your apartment. It's that simple. जब तुम्हें पैसा भी कमाना है एंड हमें ढंग से जीने भी नहीं देना है. एंड लिटरली मेरा तो तभी पेशेंस लूज हो गई व्हेन ही स्टार्टेड पासिंग आउट रेसिस्ट कमेंट्स कि तुम हमारी सिटी में आके पैसा कमा रहे हो. एंड आई वाज लाइक, अगर हम तुम्हारी सिटी में आके पैसा कमा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंडिया, इट्स नॉट योर सिटी और माई सिटी, इट्स एवरी वन सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, इफ़ वी आर अर्निंग हियर दैट्स वाई यू हैव द वैल्यू ऑफ योर हाउस. आउटसाइडर्स ही तुम्हें अपना रेंट देंगे, जो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग, जो born and brought up है वहाँ पे. nobody is going to pay that much rent for your stupid house. only the outsiders are going to pay. outsiders काम कर रहे हैं यहाँ पे तभी तुम्हारी इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है घर की. they just don't understand that much. and हम लोग तो बहुत शांति से रह रहे थे. we did not even invite any friends over. nobody came to that house even once except for the delivery guys, and he had a problem with every damn thing. हर चीज़ में उसको इंटरफेयर करना है, उसको सफाई भी करवानी है अपने तरीके से. even he did not even provide us the curtain rods. he wanted us to live without curtains in that house. Imagine. So it was all a scam and pure harassment because I felt very helpless. मेरी बहन वापस अकेले गई and उसे literally 3 दिन में उस stupid owner के साथ manage किया और नया घर ढूंढा और move किया. It's not easy for a girl यार. It's not easy. And there was no help whatsoever. This is the kind of scam that we had, and it's something I wanted to share on my channel since so long, but I was thinking karu na karu, but I think it's a good platform to share the reality and your experiences. Anyhow, ये सब हुआ and उसके बाद हमें ये घर मिल गया. All's well that ends well. यहाँ की owner भी बहुत अच्छी है. She doesn't live here thankfully, but she's a very nice lady. She's also South Indian. I'm not like सारे South Indians ऐसे होते हैं, but majorly जो हमारा experience रहा है, I would say never ever get involved with these people. Just stay away as much as you can. And it's a 2 BHK. It's on the outskirts of Bangalore. We are paying, in fact, lesser rent compared to what we paid in the previous apartment. It's a bigger house, less rent, and full freedom. There's no chick at all, and we are happy with this place now. खर्चा हुआ, harassment हुई, complete scam, brokers were useless. That owner, oh my god, it's the only person I just don't wish good for. I only wish bad things for him because the way he behaved, he and his mother, both of them are just horrible people. Yeah, let me know in the comments if you have also had such kind of experiences in this city or in some other kind of city. But yeah, this was our experience. So हमें तो कुछ खास पसंद नहीं है ये शहर. It's not even like a शहर, it's more like a village. The kind of setup that we have in Bangalore, nothing is planned, traffic, everything is just broken. इनकी मेन रोड्स ही नहीं समझ आती है. जो बैक इन पंचकुला चंडीगढ़, वी नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रीट एंड द मेन रोड एंड द हाईवे. यहाँ पे स्ट्रीट्स ही मेन रोड्स की तरह हैं. इट्स जस्ट वियर्ड, बट वी हैव टू लिव हियर. मजबूरी है. What to do, right? I know I am cribbing a lot, but that's our experience, and I don't feel shy in sharing my experience. So I don't have a powder. It's a translucent powder. I don't have a full coverage powder. जो है वो use करना पड़ेगा.
but yeah. So okay, let me just tell you about myself. What am I doing in Bangalore? Basically I work from home. Last year only I joined a new company जिसमें full work from home है. उससे पहले I was in a different company जहाँ पे थोड़ा hybrid situation थी. So I was in that company for 2 years. Again, most toxic years of my life. Work-wise, I'd learned a lot, but team का culture बहुत ही toxic था. Toxic लोग, toxic environment. It was horrible, but I learned a lot. I've learned a lot in those 2 years. How to deal with people. कैसे लोग हैं actual में दुनिया में. So उनसे deal करना सीखा मैंने. Hands-on experience लेके. Full fake world. Everyone's like bitching behind the back, and मुँह पे they are behaving like sisters. So it's very difficult to adjust this kind of reality, but that's how I think the corporate industry is. पीछे से सब bitching कर रहे हैं, मुँह पे they are behaving like sisters and brothers, and oh we like you so much. So it's weird. I cannot do that. अगर I'm bitching about somebody, I do. I'm not saying कि मैं किसके बारे में बुराई नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ. But जिसकी करती हूँ फिर मैं मुँह पे I behave like very professionally, and you won't get a feeling from me कि I like you. You'll get that professional cold vibe only if I'm bitching behind your back. But people are like experts in doing this. पीछे से बुराई करेंगे, मुँह पे ऐसे अच्छे बन के रहेंगे. I don't know how to do that. I'm still learning. It's actually quite an art form that everyone needs to know in order to survive the corporate industry. Because I don't know, इसलिए मैं वहाँ पे इतना अच्छे से survive नहीं कर पाई, and eventually I had to leave that company, and I'm in a much better place now. Working from home, but employees are good. My team is really good and professional and supportive and everything. But हाँ, work from home के अपने cons होते हैं, like anything else. So I'm going to move to the blush. I'm using the Nude Sticks blush. All the products will be linked in the description box down below. If you want to check them out, you can. Saying कि work from home के अपने problems हैं. जैसे ऑफिस जाने में there are a lot of problems. You have to deal with toxic people, traffic, there's so much time wastage, and corporate में honestly अपने लिए time बचता ही नहीं है. वैसे ही work from home के भी अपने pros and cons हैं. I'll start with the pros first. Of course, you get a lot of time for yourself, and especially if you know how to manage your work, you get a lot of time for yourself. Until unless आपके company बहुत toxic है, then traffic से बच जाते हो आप. That's the main advantage. Talking about the disadvantages, I would say there's very less exposure. You don't get a lot of contacts. You don't get to talk to a lot of people. Meetings में online meetings में आप बस काम की बात कर पाते हो. You don't get to talk about other things. So exposure missing रहता है, and you're not able to build contacts. That is something, and you get bored. At least I do. घर बैठे बैठे I get bored a lot. और मेरे घर में सब लोग ऑफिस जाते हैं. Only I sit at home. My mom, my dad, my sister, everybody's at office. तो सिर्फ मैं बोर हो जाती हूँ, और मेरे घर वाले समझते नहीं हैं. मैं जब कभी बाहर चली जाती हूँ, like sometimes I go to just Starbucks and work from there. तो मेरे घर वाले समझते नहीं हैं. They're like क्यों बाहर जाना है? So people don't understand कि work from home is also not very healthy for your mental health. You need to step out. It's very important to go outside your house to grow in life, but this is a choice I've made for myself, and I'm okay with these disadvantages, and I'm happy because I get to work from anywhere I want. I get to travel. तो इस साल मेरे because ये permanent work from home है, तो I get to travel. इस साल मैंने बहुत travel किया है, so I'm very happy. But of course there's a lot of struggle हर एक चीज़ में. I'm gonna move to my eyes. I just have this eyeshadow. It's all neutral, so I'm gonna go with this shade. Moving on, talking about my current life. अभी फ़िलहाल we are not traveling anywhere. अभी तो मैंने फ़िलहाल अपने घर जाने की भी फ़्लाइट नहीं करी है because it's so expensive. 14,000 की फ़्लाइट है चंडीगढ़ की बैंगलोर से on the day I want to go because of Diwali. It's super expensive. So I don't know कब की करनी है, अभी तक तो नहीं करी है मैंने. Even गोवा की बहुत expensive है. We were thinking कि गोवा चले जाते हैं and we'll work from there like we did in February, but we're not interested in going because expensive flights. But yeah, Goa is always a good getaway. And also I feel let's talk about moving abroad. Almost everyone's moving abroad. At least मेरे circle में, like all my schoolmates, college mates, most of the people are in Canada. And what are your thoughts about it? In my case, I somehow don't feel like going to Canada or US because I think it's just overrated and very common. इतनी दूर जाना घर वालों से दूर, I don't have the guts. Next up, I'm going to put this glitter on my eyes, Swiss Beauty का liquid glitter. That's all I have. So yeah, but I feel it's a good option because the quality of life you get there are proper rules. यहाँ पे तो road पे कोई rules ही नहीं है. People just don't know how to drive, wrong side चलते हैं, over speed करते हैं, दूसरे की गलती की वजह से आपकी गाड़ी लग जाती है. So yeah, there are a lot of problems. Pollution, there's so much of population. Definitely बाहर थोड़ी सी quality life है, but then you have to leave your family. If you're privileged enough to take your family as well with you,
great. But if you're not, I don't know how to, leave my family behind. In fact, I'm very, very family oriented. I like to stay with my parents. Bangalore आके भी कुछ टाइम में मुझे हो जाता है कि नहीं मुझे घर जाना है वापस. So I cannot even imagine going abroad and settling there. और फिर इतने सालों तक आते नहीं हैं लोग घर वापस. At the cost of what? So what do you think? What are your opinions? If you're doing good in India, would you still move abroad? Like, I'm gonna move to Kajal. This is Color Bar ka Kajal. I'm gonna finish my makeup now. बहुत बड़बड़ हो गई. I'm just gonna quickly finish my eyes and get back. So I talked a lot. I shared a lot. It's in no offense to anybody except that owner, of course. But yeah, this is all adulting. Life is all about learning and experiencing new things. And I've learned a lot. Major lessons: never ever live in a rented apartment where the owner is also living. Just try to stay away from the owners to avoid all kind of conflicts. And also, if you're living in a new city, just avoid all kinds of people. But yeah, thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe. And also all the products are linked down in the description box. You can take a look and I'll see you in my next video. Bye.